सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज अनिकेत। आवाज आ रही है मेरी? Okay, we'll start today's lecture. I welcome you all. Good afternoon. Okay, we started this lecture series, that is a polity related जो courses है. We started this on the next 4-5 lectures. Last 4-5 lectures we started the polity related series. Firstly, we seen the historical background of our constitution. Then we move to the features of our constitution. Then again we describe the constitutional amendment. What are the procedure required for the constitutional amendment within our constitution? Then the basic structure related doctrine of our constitution. Then last time we discussed the features related with the appointment and the process of, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2-3 तरह की प्रोसेसेस हो रही है, उसके हिसाब से हमने कंपैरेटिव एनालिसिस भी स्टार्ट किया था यूके और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करने के लिए, राइट? सो लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी विल कंटिन्यू विद दिस टुडे, दैट इज द पार्लियामेंट की प्रोसीजर को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं विद दिस लेक्चर. सो फेडरलिज्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, then we discuss the basic features related our constitution. Within these two, this lecture and upcoming lecture, we will discuss the parliamentary related procedure. Parliament ये बहुत important topic है. The question has been asked regarding the prelims also. Prelims में भी बहुत सारे questions आ जाते हैं इस part पे. Again the mains में भी बहुत ज़्यादा required logical requirement, कैसे logical based questions कैसे उसे tackle करना है वो भी हम सीखेंगे. So we will start today's lecture series with the Indian Parliament, उसके features, then how it works, what are the important functionaries of Indian Parliament, what are the function of Indian Parliament, right? So there are number of current related topics भी है Parliament के हिसाब से. From that UPSC can ask question in the mains. Okay, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. We'll start. कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, right? Okay. We'll start today's lecture on the UPSC CSE, crack all UPSC CSE platform, which provides you the guidance for 3 stages of UPSC. जैसे कि prelims में हो गया, mains में हो गया और interview. At the every stages, Unacademy will help you to crack and to burn over that particular. So Unacademy is providing one of the largest learning platform. It is providing the daily live classes, जैसे कि अभी का क्लास चल रहा है, then live test series, live quizzes, then the structured courses. मीन्स जो फोकस लर्निंग के कोर्सेस होंगे, जैसे कि पॉलिटी रिलेटेड हो गया, मेंस का आंसर राइटिंग हो गया, ऐसे को कैसे लिखना है, तो दैट विल बी केम अंडर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस. सो दैट विल प्रोवाइड यू द अनलिमिटेड एक्सेस टू द वेरियस नॉलेज बेस. Unacademy has started the Unacademy learning app also. You can download that learning pack that will help you to generate the most expansive for knowledge base for your UPSC preparation, right? So for me, I have given the 5 mains of UPSC civil services, then appeared in the 2 interviews also. I have a 2 years of post graduation in the biotechnology for the and DPT JRF fellowship for that. Again, I have a 3 years of more than 3 years of experience of teaching in the UPSC field at various institute, जैसे कि पुणे में और दिल्ली में भी मैं पढ़ा चुका हूँ. If you have any doubt, please join my Telegram channel. This Telegram channel you can text me also. एनी डाउट, जब आपको प्रीलिम्स का कोई प्रिपरेशन में कोई डाउट होगा या मेंस के आंसर राइटिंग में कोई डाउट होगा, तो यू जस्ट आस्क मी, यू टेक्स्ट मी. ओके, देयर आर नंबर ऑफ टॉप एजुकेटर्स आर देयर ऑन Unacademy which is provide guiding you around the 16,000 कोर्सेस आर देयर, जैसे कि पॉलिटी के चल रहे हैं, ज्योग्राफी के चल रहे हैं, एनसीईआरटी पे समरी के चल रहे हैं, देन आंसर राइटिंग कोर्सेस आर अवेलेबल आल्सो देयर. So if you want to get subscription for the Unacademy courses,
So there is a flexibility, like you can take the 1 month of course or you can take the 1 year of course. उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. So if you use the referral code, that is the अनिकेत ये रेफरल कोड है मेरा, आप यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी नॉर्मल फीस हो. जैसे कि आइकॉनिक कोर्सेस होंगे या प्लस कोर्सेस होंगे. आइकॉनिक कोर्सेस पे भी आप जब अनिकेत ये यूज करोगे यू विल गेट अ 10% ऑफ डिस्काउंट. आइकॉनिक कोर्सेस मीन जस्ट पर्सनलाइज लर्निंग के जो कोर्सेस है दैट विल गिव यू द स्पेसिफिक मेंटर ऑल्सो फॉर योर प्रिपरेशन. मेंटरशिप बेस्ड जो कोर्सेस आते हैं वो आइकॉनिक कोर्सेस में आते हैं. सो इफ यू वांट टू गेट सब्सक्राइब फॉर द आइकॉनिक कोर्सेस ऑल्सो, use my referral code, that is Aniket, and you will get the 10% of discount, right? Okay, we'll start the main lecture. Last time what we have started with the basic features of our constitution, then again we moved to the constitutional amendment related documents. Constitutional amendment को हमने describe किया. Then we discussed the federal feature of our constitution. Federalism को भी हमने describe किया कैसे ये in a comparative analysis means we have discussed our federalism with USA और कनाडा जैसे और फेडरल कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया हो गए, तो उससे हमारा फेडरलिज्म कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंशिएट करता है, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल मूव टू द पार्लियामेंट्री फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट्री फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी ऑल नो वी हैव गॉन फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये होती क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये होता क्या है, व्हाट आर द हिस्ट्री बिहाइंड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैसे इवॉल्व हुआ पार्लियामेंट, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना. ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट को हम लेमन लैंग्वेज में समझा जाए तो एक इट इज असेंबली, इट इज असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, मतलब आपके जो आपने जो इलेक्ट किए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं. क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, मींस पीपल विल डायरेक्टली डिसाइड द लॉज, उनके ओपिनियन को वो पे ज्यादा हो जाता है. तो वी हैव द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट. इंडिया हैज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है मतलब हमने जो इलेक्ट किए हुए है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने आपको पार्लियामेंट में हमारे जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे और लेजिस्लेटिव बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे. सो इनडायरेक्टली एमपीज आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. ओके, जो उस रिप्रेजेंटेटिव की जो असेंबली है, राइट, असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट जब लॉ बनाने के लिए यूज किया जाएगी या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को अकाउंटेबल रखने में मदद करेगी तो उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है. तो दिस इज द सिंपल फ्रेम ऑफ explaining the what is the parliamentary system, right. Parliament is an assembly of people's representative who are there to make laws. So this called as a parliamentary government. So parliament provides the executive. जो executive होते हैं that is the council of ministry came from the parliament. मतलब एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ही एग्जीक्यूटिव में रिप्रेजेंट करेंगे. तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर इज द हु आर द लेजिस्लेचर, द रिप्रेजेंटेटिव वोटेड इलेक्टेड बाय द पीपल. ये इंपॉर्टेंट है. और एग्जीक्यूटिव कौन होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां से जिनको मेजॉरिटी मिल जाएगी जिस पार्टी को, दैट विल फॉर्म द एग्जीक्यूटिव. सो दिस इज द मेन बेसिक फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, राइट. तो पार्लियामेंट व्हाई वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. तो हिस्ट्री अगर देखें तो वी स्टार्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ब्रिटिश इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. सो ब्रिटिशर्स हैव पास द वेरियस एक्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल के वेरियस जो एक्ट्स पास किए थे
as we have all know that the parliamentary democracy is evolved in the UK. ब्रिटेन में इवॉल्व हुआ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, दैट इज द पीपल्स चैम्बर. People's chamber. So okay, obviously UK has replicated their experience within India. So obviously if you see the 1999 Act, they have provided for the assembly of provincial assembly and the central assembly. Then again in 1935 Act, they have provided for the parliamentary system. Okay, so before that, before pre-independence era, we have experience in the parliamentary government, right? So obviously what are founding fathers, when constitution was making, founding fathers has an obvious choice for a parliamentary form of government. So they have gone for a parliamentary form of government. So this is most obvious history behind we are going for the parliamentary form of system, right? UK tha, UK, as we all know, we were under the UK's rule. So UK, where the parliamentary system has originated, obviously replicated their experience within India. इंडिया में उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस रेप्लिकेट किया. वो कैसे ये होता था? ऑब्वियसली वो मल्टी डाइवर्स कंट्री था इंडिया, मल्टी डाइवर्स कंट्री. सो उसको रेप्लिकेट करने के लिए दे हैव गिवन बाय द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? तो ये बेसिक understanding here, what is the parliamentary form of system and why India has gone for a parliamentary form of government. Okay, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, right? So as we have seen what is the parliamentary form of system and parliamentary form of government, तो उसके कुछ features आते हैं यहाँ पे. These are the basic features of parliamentary form of government. Okay, as we have seen, parliament is a people's representative chamber. People's जो representative है उनका एक चैम्बर होता है, वो पार्लियामेंट कहलाता है. वो क्या करता है? लॉ बनाता है, देन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस करता है. तो उसके ही एक फीचर्स हम यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल एग्जीक्यूटिव. As we have seen, nominal executive means de jure जो executive है, जैसे कि president. As we have seen, all our parliaments function or our parliaments act or executive function, it's performed under the name of president. So this is most important thing that the parliament के जो functions है, executive जो functions है, वो president के नाम में किए जाते हैं, right? While which is the real authority? Real authority is the Council of Minister. Council of Minister, which is selected from the पार्लियामेंट ओनली. सिलेक्टेड एमपीज है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बनाई है, वो उस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. तो डिफैक्टो जो रूल है, डिफैक्टो जो रूल करते हैं वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. और एट डी ज्यूरे जो है, मतलब ये जो नॉमिनल है, नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ यू सी द यूके ऑल्सो, यूके एज वी हैव सीन, द किंग इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव के हेड है किंग, while the real function is performed by the council of minister. The same has replicated in India, but king is replaced by the president, which is elected. Why king is there is a hereditary king. So UK की पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, मोनार्कियल पार्लियामेंट कहा जाता है वहां पे. और हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिपब्लिकन बेस्ड सिस्टम है. रिपब्लिकनिज्म इज द फंडामेंटल फीचर ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट? यूके की पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो मोनार्कियल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिपब्लिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट है. और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, राइट?
So this is most important thing regarding our parliamentary system. कोई doubt होगा तो पूछ लेना. Okay, then we will move to the next feature, that is majority party rule. As we have seen, parliament, there is an election to get elected in the parliament, right? Whichever party get majority of seat can form the government. Okay, majority seats जिसको मिल जाएंगे वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे. तो majority party rule is the रिक्वायरमेंट ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम. जैसे कि कोई भी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, कोई जो मेजॉरिटी मिल जाएगी उनको 50% की, तो वो दैट विल बी रूलिंग पार्टी. सो दैट विल सिलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट? सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ our parliamentary system, that majority party rules, while the minority party sit in the opposition, right? And majority party forms the council of minister, वो real executive हो गए. So this is most important thing. Okay, then we'll move to the next feature of our parliamentary system, is that it has a collective responsibility. So parliament has a important function. Parliament का important function है to maintain the responsibility of the executives to the people or to the people through the house. Parliament पे executive responsible रहता है. कोई भी अगर act किया, कोई भी executive act होगा, कोई भी if any act is there, it is responsible to the parliament only. So collective responsibility to the parliament of the council of ministry. Council of ministry collectively responsible है parliament को. वो कैसे होगा, वो different procedures है, जैसे कि impeach, calling attention motion हो गई, फिर no confidence motion हो गई. अगर आप responsible होंगे तो obviously पार्लियामेंट के पास ये पावर है टू रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री थ्रू द डिफरेंट डिवाइसेस लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन. ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. या मेजॉरिटी बनाने के लिए, इफ यू सी, मेजॉरिटी बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको 50% सीट्स अचीव करने पड़ेंगे. वी हैव सीन दैट 272 सीट्स आर रिक्वायर्ड इन द लोकसभा to attain the majority, right? हमारा जो 255 का जो ये है असेंबली है, उसमें 272 सीट्स चाहिए to form the government. Okay, then again this next feature is that is the political homogeneity, right? homogeneity एक बहुत सॉरी यहाँ पे homogeneous government is a feature of parliamentary system. What it means is that जो political party है, political party which forms the majority is form council of minister ही उनको मिलेंगे, right? So political ideology है इस पार्टी की, उसकी majority आ जाएगी, right? So political homogeneity is most important feature of parliamentary form of government. मतलब जो majority party है that will form the council of ministry. So obviously political जो ideologies है उनकी वो same रह जाएंगी. But this is not the always case, as we have seen in the coalition form of government. So different ideological parties came to form the government. So their coalition form of government, there is no homogeneous ideology. So our parliamentary democracy has a different feature, that is homogeneous से heterogeneous ideologies के भी parties, they are forming the coalition form of government.
Okay, so most important thing of our Indian parliamentary system, that the evolution of coalition form of government. That's why there is a no continuous political homogeneity in our parliamentary system. Then the next important feature of our parliamentary system is the double membership. मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जो मेंबर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के मेंबर्स है वो पार्लियामेंट के ही भी मेंबर्स है, और राज्यसभा से भी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, देयर इज अ सिलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आल्सो इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. सो दिस गेट्स द डबल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जब बनती है तो ऑब्वियसली राज्यसभा से या लोकसभा से वहां से मेंबर्स बनाए जाते हैं, तो दैट विल अचीव द ड्यूअल मेंबरशिप. ओके, so this is most important thing about our parliamentary system. Again, the dissolution of lower house, this is most important thing about the parliamentary system. As we have two houses, that is the Rajya Sabha and next is the Lok Sabha. Okay, so Lok Sabha is called as the upper chamber. अपर चेंबर कहा जाता है, और राज्यसभा को is called as a lower house. Lower house, that is the people's house. So it constitute the directly elected members. So obviously dissolution of lower house is an important feature of our parliamentary system. मतलब हर एक 5 साल के बाद डिसोल्यूशन हो जाएगा लोकसभा का. So that will lead to the election, new election. Right, this is most important feature of our parliamentary system. Again, if we consider the next house, that is the Rajya Sabha, Rajya Sabha is considered as a continuous chamber. Continuous chamber कहा जाता है, मतलब वो dissolve नहीं होता. As we will see in the next slides, कि Rajya Sabha is controlled as a continuous chamber. Our upper house is a continuous chamber, while the lower house, that is the Lok Sabha, is dissolved after the 5 years. 5 years का उसका ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, तो obviously that will go for the election, new election से new people's representative will get elected and that will fill the lower house. तो obviously 5 साल के बाद lower house का dissolution हो जाता है. So that is also major feature of parliamentary system. Got it? तो कोई डाउट होगा तो आपको पूछ लेना. So this is most important feature of our parliamentary system, right? Parliament. So our parliament is made up of Indian parliament is made up of two chambers. That is the Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay. And the third most important constituent of our parliamentary system is the president. Means president is also part of Indian parliament, right? Why? Because if कोई भी बिल पास किया जाए, जैसे कि लोकसभा pass the bill, if it will go to the Rajya Sabha, then again without the assent of president, it will cannot be an act. That bill cannot be translated into the act, right? So president is also the member of our parliament. So this is most important thing, right? Okay, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. Okay, then we'll move to the what is composition of our parliament. As we have seen, parliament is made up of a Rajya Sabha and parliament is made up of a Lok Sabha and parliament is made up of a president. Okay, so we will discuss, firstly we will discuss the Rajya Sabha. Rajya Sabha is called as a council of states. मतलब स्टेट को एक रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर फेडरल पॉलिटी. हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में भी वी हैव गॉन फॉर फेडरल एस्पेक्ट्स. व्हाई? बिकॉज एज वी हैव सीन अर्लियर, द फेडरलिज्म हैज कंसिडर्ड टू गिव रीजनल एस्पिरेशंस को satisfy करने के लिए we have gone for a federalism. So obviously in parliamentary system
बट इन यूके में क्या है, इन यूके देयर इज अ नो फेडरल सिस्टम, बट इन यूएसए is a federal system, right? So Rajya Sabha here represents the states within the Indian federalism. So यहाँ पे important, Rajya Sabha is made up of 250 members, where 238 members are elected members है by the states council. स्टेट के जो लेजिस्लेचर है वहां से इलेक्शन मिल जाता है उनको, while the 12 is a nominated members. So 230 members get elected from the states and from the union territories. यूनियन टेरिटरीज से भी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कौन सी यूनियन टेरिटरीज? ओनली वी हैव दैट यूनियन टेरिटरीज विच हैव लेजिस्लेचर, जैसे कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी. So these union territories are represented within the parliament in the Rajya Sabha, and the state will elect 229 members in the Rajya Sabha, while union territories will elect 4 members. These two union territories will elect 4 members in the Rajya Sabha, while there is a 12 nominated members. So required constitutional strength is given is 252, but the real strength of our Rajya Sabha is 245, right? हमारे राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 245 है अभी, उसमें से 229 स्टेट से इलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद 4 जो है वो यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होते हैं, और 12 members which is nominated by the president from the different background, जैसे कि आर्ट हो गए, फिर सोशल सर्विसेज के जो बैकग्राउंड है उन जो लोगों का, साइंस के फील्ड से जो नॉमिनेट पर्सन्स है उनकी अचीवमेंट्स ज़्यादा है तो उनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स का ये है वो विच इज केम फ्रॉम द आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन ने फर्स्टली दे स्टार्टेड टू नॉमिनेट द डिफरेंट मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से नॉमिनेट करने के लिए स्टार्ट किया था. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द नॉमिनेटेड मेंबर्स, राइट. और इलेक्शंस यहाँ पे कैसे होते हैं? राज्यसभा के इलेक्शंस, स्टेट जो लेजिस्लेचर है दैट इलेक्ट्स द मेंबर्स पॉपुलेशन के हिसाब से उनको नंबर्स दिए गए हैं. सो इफ यू कंपेयर आवर राज्य अपर काउंसिल विद द यूएसए हैज गिवन द इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स, राइट. सो एवरी स्टेट, USA has a 50 states, so every state has given 2 members. So that will lead to the generation of 100 members in the upper house of USA, that is the Senate. But in the case of India, take an example, it is based on the population. जो seats allocate की गई है हर एक state को, वो population के हिसाब से allocate की गई है. तो obviously जैसे कि जो larger population state है जैसे कि यूपी को 31 सीट्स अलॉट की गई है, सॉरी. ऑल द स्मॉल स्टेट्स लाइक त्रिपुरा ले लो तो आपको यहाँ पे एक ही सीट राज्यसभा की मिल जाएगी. तो दिस इज द अनइक्वल नेचर ऑफ फेडरलिज्म. ये एक अनइक्वल जो फेडरलिज्म है हमारा इंडिया का, वो राज्यसभा में हमको पता चल जाता है. सो राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट विच रिप्रेजेंट्स द स्टेट इंटरेस्ट एट द अपर हाउस. सेंट्रल असेंबली में स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा बनाई गई. सो दिस इज अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म, वन ऑफ द फेडरलिज्म फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट. यहाँ पे मेंबर्स स्टेट से आते हैं, यूनियन टेरिटरीज से आते हैं एंड नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. और जो नॉमिनेशन है वो हमने आयरलैंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से बोरो किया गया है. कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. ओके, सो ये तो हो गया राज्यसभा. अभी द नेक्स्ट चेंबर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंबर, इट इज द लोअर हाउस
इज द लोकसभा. लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आर देयर. डायरेक्टली इलेक्टेड members. Okay, so from the states वो टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है वहां से इलेक्ट होते हैं. दैट विल गिव द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स द लोकसभा में. अगेन वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज आर गिवन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन के हिसाब से ही हर एक स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी दिए गए. जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट हो गया, वहां पे 48 ही मेंबर्स हैं. और कुछ जैसे कि नागालैंड हो गया, वहां पे एक ही मेंबर है लोकसभा में. ओके, सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन. वहां पे भी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है. सो द नॉर्मल स्ट्रेंथ गिवन of the Lok Sabha is given is the 552. 552 a normal Lok Sabha की strength बताई गई है, right? But actual में we have only 545 members, right? उसमें से 530 members came from the states. Again, there are 20 members which came from the union territories, right? And 2 members which is nominated. Again, यहाँ पे भी as we have seen in the Rajya Sabha, Lok Sabha also have a nominated Anglo Indians के लिए nomination की प्रावधान है, nominated by the president. Okay. What are the characteristic feature of our Lok Sabha if we compare with the UK की जो lower house है उससे compare करें तो we have given the nominated member feature. This is most important thing. Again, we have a reservation policy. कुछ जो seats है वो constitutionally reserved है under article 333 and 334. The scheduled caste and scheduled tribe reservation is there in our Lok Sabha. So this is most important. Again, the controversy current affairs के हिसाब से अगर हम देखें, if you see the current affairs related controversy regarding, so जो Constitutional Amendment Act है 2126 Constitution Amendment Act that has extended the SC/ST reservation under article 334 for 10 years, right? But earlier what they have happened, they have also extended the Anglo-Indians nomination with this. But in recently passed 126 Constitutional Amendment Act, यहाँ पे एंग्लो इंडियन को एक्सटेंशन नहीं दिया गया. सो व्हाट वी हैव सीन, द नॉमिनेशन जो था प्रेसिडेंट का वो उसको रिमूव मतलब उसको बदल दिया है. दिस नॉमिनेशन प्रोसीजर हैज बीन रिमूव्ड by the constituent amendment bill, that is the 126. so this is most important. तो मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पे हम देखें फीचर्स हम देख रहे थे कि कैसे स्टेट से यूनियन टेरिटरीज से कैसे लोकसभा में इलेक्शंस के डायरेक्ट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, वहां से डायरेक्टली पीपल्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे गो इनटू द लोकसभा टू रिप्रेजेंट देम, राइट? So the members came from the state union territories and the nominated members. But nominated members are again with the current affairs we select current affairs के जो कुछ ये है एग्जाम्पल्स है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि नॉमिनेशन की जो ये थी कन्वेंशन था वो उसको वो उन्होंने रिमूव कर दिया है. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. ओके, then we will move to the next topic.
जैसे कि वी हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट कहाँ से बनता है। पार्लियामेंट, एज वी हैव सीन, पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। लोकसभा एंड राज्यसभा से हमारा पार्लियामेंट बनता है, फिर प्रेस से बनता है, फिर लोकसभा में एज वी हैव सीन लोकसभा हाउ पीपल्स गेट इलेक्टेड एंड हाउ द इलेक्शंस आर हैपन इन द राज्यसभा, और किस किस से नॉमिनेशंस होता है। तो फंक्शंस है पार्लियामेंट के, राइट। एज वी हैव सीन पार्लियामेंट हैज इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू डू। ओके, पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक द लॉज, लॉज बनाना ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। देन इट गिव फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। एंड टू रिप्रेजेंट द पीपल, लोगों के इंटरेस्ट को बताना, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है पार्लियामेंट का। तो उसके हिसाब से देयर आर सम फंक्शनरीज आर देयर। पार्लियामेंट को फंक्शनल बनाने के लिए देयर शुड बी फंक्शनरीज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बिजनेस को चलाने के लिए देयर शुड बी फंक्शनरीज, राइट। कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसको चलाने के लिए फंक्शनरीज चाहिए होते हैं। तो व्हाट आर द फंक्शनरीज आर देयर इन द पार्लियामेंट, तो उनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा में आ जाता है, दैट इज द स्पीकर। स्पीकर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है स्पीकर भाई, ये हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पीकर इज इलेक्टेड विद इन, जो लोकसभा के जो न्यू मेंबर्स है लोकसभा के, दैट विल इलेक्ट देयर स्पीकर विद इन देमसेल्व्स। सो ऑब्वियसली द majority party will get their member to be a speaker, right? This is important thing. Again, जो स्पीकर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी उसके खुद के मेंबर को ये कर देगी। अगेन इफ यू सी द फंक्शंस ऑफ स्पीकर, स्पीकर के फंक्शंस देखेंगी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल्स एंड डेकोरियम है जो पार्लियामेंट का, उसको अचीव करने के लिए हाईएस्ट फंक्शनरीज होते हैं, वो है स्पीकर। जो रूल्स बनाते हैं, फिर डेकोरम जो है पार्लियामेंट का वो अचीव करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पीकर केम्स इन द लोकसभा इज दैट एडमिशन ऑफ रिजोल्यूशन और मोशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पीकर, राइट। कोई भी रिजोल्यूशन हो गया, कोई भी मोशन हो गया, उसको लोकसभा में एडमिशन के लिए स्पीकर का कंसेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी हैव सीन द इम्पीचमेंट मोशन लास्ट ईयर, द अपोजिशन हैज गिवन द इम्पीचमेंट मोशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए। इम्पीचमेंट मोशन उन्होंने इंट्रोड्यूस करना चाहता, तो बट लोकसभा स्पीकर हैज not admitted it, he has not given the permission to admission. So this is most important function of speaker. So इसके लिए स्पीकर की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्पीकर केम्स इन द मनी बिल प्रोविजन। जैसे कि मनी बिल है, ये भी कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे स्पीकर की पोजीशन पे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बिकॉज देयर हैज बीन सम कंट्रोवर्सी। जैसे कि मनी बिल की कंट्रोवर्सी हो गई, कौन सा भी बिल हो वो मनी बिल है कि नहीं, स्पीकर विल डिसाइड वेदर दिस बिल इज मनी बिल और नॉट। एक्चुअली मनी बिल होगा तो ऑब्वियसली लोकसभा के पास ज्यादा पावर आ जाती है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा, राइट। उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेकिन स्पीकर ये डिसाइड करता है वेदर दिस बिल इज मनी बिल और नॉट।
or whether to admit this resolution or whether not to admit this motion. So this is depend upon the speaker only, right? Again, the fourth most important functions of speaker is that it is a chairman of rules committee, then general purpose committee एंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. ये लोकसभा की जो कमिटीज है उसके जो चेयरमैन होते हैं वो स्पीकर होते हैं. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द स्पीकर. तो स्पीकर का पोजीशन है, स्पीकर का जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगेन द 10th शेड्यूल का जो 10th शेड्यूल जैसे कि डिफेक्शन के जो क्लॉजेस है उसमें भी स्पीकर के रोल को इंपॉर्टेंस दी गई है. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द स्पीकर. स्पीकर एडमिट करता है मोशन, स्पीकर विल डिसाइड वेदर विच बिल और मनी बिल और नॉट, देन ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ रूल्स कमिटी, जनरल पर्पज कमिटी. देन अगेन द डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन जो प्रोविजंस दी गई है वहां पे भी स्पीकर के रोल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. सो ड्यू टू दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर व्हाट, political parties has given the very much importance to the role of speaker. Again, if you compare our speaker's position with the United Kingdom's speaker is considered as a neutral institution. Why? Because when you get elected for the United Kingdom के कोई भी member of parliament when get elected for the speaker's position, he will resign from that party. This is most important thing. So that will give the neutrality, unbiasedness for the speaker's position, right? But in India there is a no convention like that to get resign from the particular party. So India's speaker is not neutral as it compares with the United Kingdom की जो स्पीकर की इंस्टीट्यूशन है उसे हम अगर कंपेयर करें इंडिया से तो इंडिया स्पीकर इज कंसिडर्ड एज अ नॉट दैट न्यूट्रल एज कंपेयर टू द यूनाइटेड किंगडम्स के स्पीकर से, राइट? सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग द पावर ऑफ स्पीकर्स, जैसे कि एंटी डिफेक्शन पावर हो गई, फिर एडमिशन ऑफ मोशन की हो गई, फिर एडमिशन ऑफ मनी बिल्स की हो गई. तो यहां पे यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है स्पीकर की पोजीशन को, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडवाइज्ड फॉर द न्यूट्रलिटी ऑफ स्पीकर बट कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर द स्पीकर्स पोस्ट. बट यूनाइटेड किंगडम में एक कन्वेंशन एस्टैब्लिश हुआ है, उसके हिसाब से इफ any political member get elected to the position of speaker, then he will resign from that party to maintain the neutrality of that particular institution of speaker. ये important चीज हमें ध्यान में रखना है. Then again we will move to the next functionary, that is the chairman of Rajya Sabha. As we have all know, the Rajya Sabha chairman is the vice president. जो VP रहते हैं, as like the United States, our VP presides over the Rajya Sabha. Okay, तो elections जो VP के होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, that लोक सभा also participate and the Rajya Sabha also participate in the election of vice president, right? यहाँ पे अगर हम देखें तो both elected as well as nominated members participate in the election of राज्यसभा के जो चेयरमैन है, जनरली द वाइस प्रेसिडेंट, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आवर पार्लियामेंट्री फंक्शनरीज, दैट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट उसको प्रिसाइड करते हैं. दिस इज बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सेनेट को, उनका जो अपर हाउस है उसको प्रिसाइड करते हैं. सो दिस इज मोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, राइट? ओके, देन वी विल मूव टू द थर्ड फंक्शनरी ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज द लीडर ऑफ हाउस. उसको मेजॉरिटी लीडर भी कहा जाता है, मेजॉरिटी लीडर, राइट?
Okay, the if the party, the political party which has a majority in the Lok Sabha select one of their member as a majority leader. As we have seen in the UK, the majority leader will be always will be prime minister. This is most important. तो प्राइम मिनिस्टर अगर बिजनेस कंडक्ट करना होगा तो मेजॉरिटी लीडर will give the direction to the member of their party or political parties. Again, it will decide about the functions, agenda, which bill has to be introduced. So that is the most important function of leader of the house, right? Leader of the house कौन होता है? जो majority party है, majority जो जिस party को मिली हुई है, so that will select one of their leader as a majority leader to govern their member of parliament. Again, UK में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही लीडर ऑफ हाउस होते हैं यहाँ पे. लेकिन if we compare with the India, this is not always the case that the PM should be the majority leader of the house. वो PM होंगे, ये कोई रूल नहीं है इंडिया में. Why? Because there are some prime ministers which was from राज्यसभा से जो जैसे कि मनमोहन सिंह हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फिर देवेगौड़ा हो गए, HD देवेगौड़ा. These people were from the राज्यसभा, right? राज्यसभा से वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे. So obviously there was a different leader of the house in the Lok Sabha at that time. Okay, so this is not a convention in Indian parliamentary system that the prime minister should be the leader of the house or the majority leader. So that differentiate the parliamentary system, our parliamentary system, with the United Kingdom की parliamentary system को. समझ में आ रहा है? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. Okay, then we'll move to the next functionary, that is the leader of opposition. Leader of opposition, ये भी important functionaries है, leader of opposition. Why? There has been a controversy, recently controversy है leader of opposition की. Leader of opposition, this is most important functionary. Again, जो opposition party है, opposition party or the minority party select their leader. So this institution is a statutory institution, right? Okay, this institution is a statutory institution. It is not a constitutional but a statutory. In the 1977 में it has given the leader of opposition has given the statutory status. So this is most important thing. Why? If you compare with the UK's leader of opposition is considered as a prime minister in waiting. Okay, and again in UK, leader of opposition preside over the shadow cabinet. So this is most important thing regarding the leader of opposition. So, but what in 200 last year's what happened in the last year's election is that no single party, मतलब जो majority party है, that's the BJP. Again the opposition party है, no single party which was able to achieve the 10% of seats. So obviously we have a multi-party parliamentary system. So किसको leader of opposition बनाए?
Why? Because it is a statutory state, statutory body, right? तो किसको अपोजिशन पार्टी बनाए उसके लिए झगड़ा चल रहा था, obviously. So there is a no written rule in the constitution to whom we select the leader of opposition. Why? It because it is a statutory status. They have a rank of related with the cabinet minister. They have given the special जो ये है उनको पावर्स दी गई है विद इन द पार्लियामेंट. तो किसको अपोजिशन का लीडर बनाए, तो उसके लिए झगड़ा चल रहा था बिकॉज कांग्रेस वाज नॉट एबल और वेदर अनदर पार्टी वाज नॉट एबल टू win the 10% of seats. So 10% of seats, ये भी जो रूल है, it is given by the मालवनकर जो हमारे फर्स्ट स्पीकर थे, स्पीकर उन्होंने दिया गया था. तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीगल, इट इज अ इनफॉर्मल रूल कि जो भी पार्टी 10% ऑफ सीट्स अचीव कर लेगी, मतलब 52 सीट्स अचीव कर लेगी या 55 सीट्स अचीव कर लेगी, उसको ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए. दिस इज गिवन बाय द मालवनकर, दिस इज सजेस्टेड बाय द मालवनकर, आवर फर्स्ट दिस स्पीकर, but this rule is not written. Again, why leader of opposition is important? Because as we have seen, जैसे कि CBI, फिर CVC, ओके, फिर ना जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसके जो सिलेक्शन है, कोलोजियम का सिलेक्शन, वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन को एक जगह है कोलोजियम में सिलेक्शन के लिए, उनके वॉइस को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? So leader of opposition is a very strong position, very respected position, and it is given under the statute. That's why there is some controversy regarding the leader of opposition. मतलब किसको दे किसको नहीं दे. फिर अगेन लोकायुक्ता, लोकपाल के सिलेक्शन के लिए भी लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल है. So if you question ask regarding the leader of opposition, why should be leader of opposition, so ये important चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए, right? So this is most important functionary in our parliamentary system. Again, we will move to the next functionary, that is the whip. Whip is a chief officer of a political party. To govern the members voting and behavior. So again, this whip functionary is not given by the constitution, or it is not given under the any statute also. कोई लॉ भी नहीं है उसके लिए और कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं बनाया गया. तो दिस इज अ इनफॉर्मल डिवाइस, इनफॉर्मल फंक्शनरी है. एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसके अंदर बनाया गया ये है, एक इनफॉर्मल डिवाइस है. सो इट कंट्रोल्स द इफ वोटिंग इज देयर. So chief whip, what it will do, chief whip will tell that where should the party members vote, कौन से जगह पे वोट करना है, कौन से जगह पे नहीं करना, ये चीफ whip बताएगा अपने पार्टी मेंबर्स को. सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर वो पार्टी मेंबर्स ने उसको ये नहीं किया, उसको चीफ whip को फॉलो नहीं किया, सो दैट विल कंसिडर्ड एज अ डिफेक्शन और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. सो इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है एक व्हिप. उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड नहीं है या कोई स्टैट्यूटरी बैकग्राउंड नहीं है. दिस इज अ इनफॉर्मल डिवाइस प्रोवाइडेड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके अंदर उन्होंने इनफॉर्मल डिवाइस बनाया हुआ है. जो मेंबर ऑफ किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वो चीफ व्हिप डिक्लेयर कर देंगे. So that will give the direction to the member of particular party
whether to vote against or whether to vote for. Okay. Okay, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना मुझे. Okay, that is the main important functionaries of our parliamentary system, right? Okay, then we will discuss the session of our parliament. How parliament functions. How parliament functions. And what are the procedure? Procedure क्या है पार्लियामेंट के फंक्शन के लिए? So the first important, whether you are making law or whether constitutional amendment bill pass करने के लिए or whether to act for any resolution, obviously parliament has to meet, right? Parliament का एक session जो होता है that has to be called for this business, to conduct the business. पार्लियामेंट्री जो बिजनेस होता है उसके कंडक्ट के लिए पार्लियामेंट्री सेशंस बनाए जाते हैं. सो एवरी पार्लियामेंट्री सेशन रिक्वायर्ड द समनिंग, राइट? समनिंग बाय द प्रेसिडेंट. ये कौन करता है? वो प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट विल समन द पार्लियामेंट्री सेशन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जब एडवाइस करेगी वो पार्लियामेंट को समन कर देंगे प्रेसिडेंट. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दैट देयर शुड नॉट बी 6 months ड्यूरेशन. 6 months से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए 2 सेशंस के अंदर. सो यही इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, राइट? बट मीन्स दैट एवरी ईयर should be 2 sessions of parliament. Okay, but in Indian constitution, Indian parliamentary system, there are 3 sessions. That is the budget session, okay, then winter session, okay, and the summer. So this is most important फीचर ऑफ आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम के 3 सेशंस रहता है वहां पे. अगेन यहां पे हम देखें, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, समन कर लिया पार्लियामेंट तो दैट विल स्टार्ट द बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट. समनी हो गया उसके बाद ही पार्लियामेंट अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है, राइट? सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ सेशन. सेशन स्टार्ट हो गया पार्लियामेंट का. देन अगेन सेशन, ऑब्वियसली सेशन ये कंटिन्यूअस नहीं रहता है, राइट? देयर शुड बी सिटिंग्स. पार्लियामेंट सिट करेगा, देन पार्लियामेंट विल केम सिट देयर, देन विल डिस्कस द पर्टिकुलर एजेंडा, देन इट विल डिस्कस द पर्टिकुलर बिल्स, राइट? सो उसके विद इन दैट ड्यूरेशन देयर शुड बी सम रिसेस पॉइंट, रिसेस टाइम, राइट? जैसे कि मतलब दिन का काम हो गया तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट हैज टू बी एडजर्न एंड दैट विल गैदर इन द नेक्स्ट सिटिंग. ओके, वो जो सिटिंग को खत्म करना हो, पार्लियामेंट्री सिटिंग को, सेशन में एक सेशन में सिटिंग चल रहा है उसको खत्म करना हो तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट हैज टू बी एडजर्न, विच इज गिवन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. दैट इज वेदर इट इज अ लोकसभा में कौन होंगे? स्पीकर होंगे, और राज्यसभा में वीपी होंगे या डेप्यूटी वीपी, वाइस प्रेसिडेंट होंगे या उनके जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो हो जाएंगे. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कोई भी सेशन चल रहा है उसमें सीटिंग्स हो रही है तो सीटिंग्स को खत्म करने के लिए एडजर्नमेंट किया जाता है. मतलब एक सीटिंग हो गई, यहाँ पे है सेशन बंद नहीं हुआ, सिर्फ सीटिंग को उन्होंने खत्म कर दिया. then comes the adjournment sign die. ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, which is also प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि कब वो एडजर्नमेंट करेंगे. एडजर्नमेंट में और एडजर्नमेंट सिनेडाइन में इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि एडजर्नमेंट में
जो नेक्स्ट सीटिंग होगी उसके टाइमिंग्स बताए जाते हैं. देयर शुड बी मेंशनिंग ऑफ टाइमिंग्स वेदर नेक्स्ट सीटिंग विल बी देयर, राइट. अगेन बट एडजर्नमेंट सिनेडाइन में क्या होता है, ये इंडेफिनाइट पीरियड के लिए वो सीटिंग खत्म की जाती है. पीरियड इज नॉट मेंशन वेदर टू रिजॉइन द नेक्स्ट सीटिंग और ऑल्सो, जैसे कि सेशन खत्म करना हो ऑब्वियसली तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्नमेंट सेंड डाइट करेंगे. तो उसके बाद प्रेसिडेंट है, इसे प्रोरोगेशन कहते हैं कि जिस सेशन को खत्म हो जाती है, पार्लियामेंट्री सेशन खत्म हो जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद, उसको प्रोरोगेशन कहते हैं. वो सेशन बंद हो जाता है. तो सेशन बंद करने से पहले एडजर्नमेंट सिनेडाइन कहा जाता है, मतलब वो सीटिंग को खत्म कर देते हैं. उसके बाद प्रेसिडेंट उसे प्रोरोग कर देते हैं उस स्पेसिफिक सेशन को. राइट. अगेन द नेक्स्ट सेशन लाइक बजट सेशन और विंटर सेशन विल फॉलो आफ्टर स्पेसिफिक रिसेस टाइम, मतलब जो दो बोथ सेशन का जो ड्यूरेशन है विद इन, जो ड्यूरेशन होता है विद इन 2 सेशंस दैट कॉल्ड द रिसेस टाइम, राइट. ये इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, समझ में आ रहा है? सॉरी. ये प्रोरोग हो गया हमारा सेशन. देन द डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाई ओनली लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड. राज्यसभा इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस चैम्बर. So one third member of राज्यसभा retired for, हर 2 साल के बाद राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर्स है वो रिटायर हो जाते हैं. That will be new elections will be there. So this is a continuing chamber. लेकिन लोकसभा है, this is the most important feature of parliamentary system, that the lower house, that the directly elected people's chamber get dissolved after particular duration. जैसे कि we have here 5 years. After 5 years of completion of particular Lok Sabha, that will get automatically dissolved. So dissolution कैसे होता है? It is automatic dissolution. This is the normal process. After the completion of 5 years, Lok Sabha will get automatically dissolved. But जो external circumstances, extraordinary circumstances आते हैं, जैसे कि president has a power to dissolve the Lok Sabha. Sorry, president has a power for a dissolution of Lok Sabha. But this is not a suo motu power, right? It is based on the recommendation of Council of Ministry. If Council of Ministry recommends President to dissolve the Lok Sabha, then President will dissolve the Lok Sabha. But again, some discretion is there in the dissolutionary power of President. के resolution जो power है उसमें भी President है, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली कैन डिसॉल्व, जैसे कि 5 years के बाद डिसॉल्व हो गई लोकसभा. अगेन द प्रेसिडेंट हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री. इफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रिकमेंड प्रेसिडेंट फॉर डिसॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली president has to follow that direction. Again, the third most important is this: there is a discretionary power. Some discretionary power is also there while the dissolving the Lok Sabha. If president thinks that the council of ministry has lost the faith of parliament, if president thinks that the council of ministry has lost the faith in the parliament, then president will not consider their recommendation of dissolution of Lok Sabha. So ये important discretionary power आ जाती है president के पास while dissolution of
Lok Sabha, which is the important feature of parliamentary system. समझ में आ रहा है? सो ऐसे पार्लियामेंट वर्क करता है. पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट ऑब्वियसली पार्लियामेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं. सो टू परफॉर्म दैट फंक्शन देयर इज अ प्रोसीजर, राइट. प्रोसीजर क्या होती है कि पार्लियामेंट के सेशंस बनाए जाते हैं, उसमें वो अपना खुद का बिजनेस कंडक्ट करते हैं. सेशंस आर देयर टू कंडक्ट द पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट, राइट. तो उस सेशन में क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन को समन किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. अगेन जो सेशंस की जो सीटिंग्स होती है दैट हैज टू बी एडजर्न टू कंडक्ट द डिफरेंट बिजनेसेस. ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिफरेंट बिजनेसेस है, उसको कंडक्ट करने के लिए एवरी सिटिंग हैज टू बी एडजर्न. अगेन who is the authority to adjourn this particular sitting of the session is the presiding officer, that is the speaker, और वैसे कि वाइस प्रेसिडेंट हो गए इन राज्यसभा. अगेन एडजर्नमेंट साइन टाइम, ये एक इंपॉर्टेंट है. वाकई एडजर्नमेंट अगले वाला एडजर्नमेंट है जो है दैट इज फॉर अ डेफिनाइट पीरियड, बट एडजर्नमेंट साइन टाइम is for an indefinite period, right. It is also given by the presiding officer. Then the prorogation is the just मतलब ये होता है कि जो सेशन है उसको खत्म करने के लिए that terminates the session, उसको prorogation कहा जाता है. तो that is given by the president उसको असेंट दे देता है फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ सेशन. अगेन जो लोकसभा है उसको ही डिसॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है, बट दैट इज नॉट अ सुमोटो पावर. देयर इज केम इन द थर्ड, दैट इज द ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन. देन अगेन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, एंड देन अगेन बाय द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट. ये समझ में आ रहा है? देन ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द कोरम. Quorum is the minimum requirement of members, whether it is a LS Lok Sabha or whether it is a Rajya Sabha, to be present to start functioning of particular house. So there has been constitution has given the specific requirement for the functioning of the house, that is the minimum number of members should be present, that the 1/10 member, जैसे कि लोकसभा में हो गए 50 मेंबर्स प्रेजेंट चाहिए, या राज्यसभा में 25 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट टू कंटिन्यू विद द बिजनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस. लोकसभा में अगर 50 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली लोकसभा कुड नॉट फंक्शंस. अगेन द राज्यसभा, इफ 25 मेंबर्स इज नॉट देयर देन राज्यसभा कुड नॉट वर्क. सो ये इंपॉर्टेंट है. अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द वोटिंग प्रोसेस. समन हो गया, बिल डिस्कस किए, सेशन स्टार्ट हो गया, देन एजेंडा आ गया, then that has came the bill also. So उसके बाद members of parliament should vote on that particular bill in the supportive manner or in the opposing manner, right. So उसके लिए वोटिंग की प्रोसीजर दी गई है. So voting is done either by voice vote से बात की वोटिंग कर सकते हैं, और आइदर शुड बी बटन प्रेसिंग बटन, यस और नो के जो बटन्स हैं, और बाय जस्ट ये है लिख के जो मतलब चिट्ठी डाल के जाए, दैट इज द रिटन वोट. सो दिस इज द वोटिंग प्रोसीजर. ओके, तो ये है सेशंस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे रिजॉल्व होता है, कैसे वोटिंग होती है. कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. ओके, देन विल मूव टू द, देयर आर डिफरेंट डिवाइसेस. ऑब्वियसली पार्लियामेंट हैज टू फंक्शन, और वो कैसे फंक्शन होती है, हाउ इट फंक्शंस, ये वी हैव सीन हाउ इट फंक्शन, जैसे कि सेशंस में वो फंक्शंस करती है. देन व्हाट आर द डिवाइसेस, दैट इज द मीन्स गिवन टू द पार्लियामेंट, as we have seen, पार्लियामेंट के जो फंक्शंस है, पार्लियामेंट हैज टू परफॉर्म द फंक्शंस
through different means, through means. It is called the devices. जैसे कि पार्लियामेंट का फंक्शन है कि क्वेश्चन करना. ओके, वन वाज टू आस्क द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, or when someone wants to measure the accountability of the executive, or someone wants to know about for a specific जो क्राइटेरिया करंट के जो अफेयर्स है उसके बारे में एग्जीक्यूटिव से पूछना चाहता है, एग्जीक्यूटिव से. सो दैट विल बी डन थ्रू मूविंग रिजोल्यूशन और पर्टिकुलर मोशन और asking questions directly to the minister, or taking opinion of whole house, or by censuring the executive, or to show strength of the council of minister. So इन functions को perform करने के लिए there are some devices given to the parliament, right? So उस devices को हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं. तो first device is given to this question hour. जब parliamentary session start हो जाता है, the first hour is devoted to the questioning to the executive. एग्जीक्यूटिव या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्वेश्चंस करने के लिए द क्वेश्चन आवर हैज बीन गिवन इन द रूल्स एंड प्रोसीजर एंड बिजनेस. रूल्स एंड प्रोसीजर एंड बिजनेस है पार्लियामेंट की, वहां पे क्वेश्चन आवर्स मेंशन किया गया है. क्वेश्चन आवर्स में क्या करेंगे? ऑब्वियसली क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ओरल क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और रिटन क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, राइट? सो स्टार क्वेश्चंस are the oral questions. Which is asked by the member to the executive. Okay, so obviously oral questions होंगे, so that will be followed by the supplementary questions. सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस उस पे होंगे. ऑब्वियसली ओरल ही आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, बट द अनस्टार्ड क्वेश्चंस आर द रिटन क्वेश्चंस. इफ एनी मेंबर्स आर आस्क क्वेश्चंस टू द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और पर्टिकुलर मेंबर, सो दैट विल बी इफ दैट इज अ अनस्टार्ड क्वेश्चन, दैट इज देन इट इज अ रिटन क्वेश्चन. तो रिटन होंगे तो ऑब्वियसली सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछ सकते आप. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. Okay, starred questions, which are the oral questions. Unstarred questions are the written questions, and the short notice questions, short notice questions are the questions which has given at least 7 days of notice to particular minister before asking. That is called as short notice questions. So these are the three devices which has been followed by the parliamentary members within the question hours. ये devices सिर्फ questions hours में ही आप use कर सकते हो. This is most important thing. Okay. Again, the next important device given in the Indian parliamentary procedure is the 0 hour. So 0 hour ये एक ऐसा informal device. It has been the innovation of our parliamentary system, innovation of our parliament,
सो 0 आवर, सो बेसिकली क्वेश्चन आवर हो गया। क्वेश्चन आवर्स के बाद एक पर्टिकुलर जो डेज का एजेंडा है उसको डिस्कस करता है हाउस, राइट। सो देयर इज बी the normal procedure should be, first is the question hour, then the session will the parliament will discuss the basic agenda of the particular day, but within that period there is a innovation by the Indian Parliament that is considered as a 0 hour. So ये rules and procedure में mention नहीं है, as the question hour is mentioned in the rules and procedure, but 0 hour is a not mentioned in the rules and procedure also. So यहाँ पे कौन से भी questions the member can ask the questions at any without notice. So this is most important device given to the Indian parliamentary members. This is an innovation by Indian parliamentary system. 0 hour is the innovation of Indian parliamentary system. Okay. The motions. Again, the third device is the motions. Motions is the specific instrument given to the parliament. So there are number of different motions. First is the privilege motions. The second is the calling attention motions. Third is the adjournment motion. And fourth is the no confidence motion. So these are the most important motions given to the parliamentary form of government. So privilege motions is moved by the members if he thinks that there has been a violation of parliamentary privileges by the member of executive के members ने जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को वायलेट किया तो ऑब्वियसली प्रिविलेज मोशन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मूव करेगा। जैसे कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, जो मेंबर्स है जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन दी गई आंसर्स में, अपने स्पेशल आंसर्स में, तो ऑब्वियसली members will thought that it is a breach of our privilege and he will move the privilege motion. यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि it is a type of censure motion, right? एक censure motion है privilege motion, but ये पास हो गया तो that will not lead to the रेजिग्नेशन नहीं, ये पास हो गया फिर भी वो चेंबर ऑफ मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रिजाइन नहीं करता। लेकिन ये कॉलिंग अटेंशन मोशन है, द नेक्स्ट मोशन इज कॉलिंग अटेंशन मोशन। दिस इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस। इफ कॉलिंग अटेंशन मोशन हैज टू बी इंट्रोड्यूस इट शुड बी इनोवेशन। ये भी एक इनोवेशन है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन इज इंट्रोड्यूस बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू डायरेक्ट, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई ये होगा, पब्लिक इंपॉर्टेंस का, सॉरी, कॉलिंग अटेंशन मोशन कब इंट्रोड्यूस की जाती है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थिंक्स दैट देयर हैज बीन नो अटेंशन गिवन बाय द एग्जीक्यूटिव और द मिनिस्टर। मिनिस्टर एक पब्लिक पॉलिसी को अटेंशन नहीं दे रहा है तो ऑब्वियसली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल मूव द कॉलिंग अटेंशन मोशन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर। ये भी सेंश्योर मोशन है। सेंश्योर मोशन इज गिवन व्हेन देयर इज अ थ्रेट अगेंस्ट द मिनिस्टर। कोई भी मिनिस्टर को सेंश्योर करना हो, उनको मतलब वो सोए हुए हो उनको जगाना हो, एज लाफिंगली वी कैन से दैट, तो उसको सेंश्योर मोशन कहा जा सकता है। वो उसको सेंश्योर करेगी, मतलब उसको हार्म करेगी मिनिस्टर को। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन केम द कॉलिंग अटेंशन मोशन हो गई। देन एडजर्नमेंट मोशन।
ये भी एक सेंश्योर मोशन है. So it requires support of 50 members of the parliament to get introduced. कोई भी जो पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक स्टेज है, वहां पे पूरे हाउस का इट इज इंट्रोड्यूस्ड विद इन द हाउस टू फोकस, टू डाइवर्ट द फोकस ऑफ होल हाउस. कॉलिंग अटेंशन मोशन में हमने देखा कि टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पर्टिकुलर मिनिस्टर, राइट. लेकिन adjournment मोशन इज देयर टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ होल हाउस फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम. एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए खुद पूरे हाउस को उस हाउस का अटेंशन मांग लेना, ये adjournment मोशन में आता है. सो दिस इज ऑब्वियसली द सेंश्योर मोशन. इफ ये मोशन पास हो गया तो यहां पे भी रेजिग्नेशन देना नहीं पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है. बट नो कॉन्फिडेंस मोशन इज सेम एज द कॉलिंग एडजर्नमेंट मोशन है. यहां पे भी 50 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसका सपोर्ट लगेगा टू इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर मोशन. इफ द मोशन हैज पास्ड देन गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन. Government has to resign. That days government has to resign if the no confidence motion get passed within the house. So ये important चीज है to differentiate between the privileged motion, calling attention motion, adjournment motion and no confidence motion. Then the resolutions, there is another device that is the resolutions. Resolutions है वो people's, जो लोगों के specific इंटरेस्ट को बताने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसको रिजोल्यूशन कहा जाता है. रिजोल्यूशंस पे भी वोटिंग हो जाता है, तो रिजोल्यूशंस आल्सो गेट वोटेड, उसको देन दैट विल बी गेट पास्ड. सो दीज आर नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स to perform the functions given to the parliament. जैसे कि क्वेश्चनिंग का फंक्शन हो गया तो ऑब्वियसली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल गो फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय द स्टार्ड क्वेश्चन. क्वेश्चनिंग आवर्स में वो क्वेश्चन करेंगे या 0 आवर्स में क्वेश्चन करेंगे. इफ कोई एग्जीक्यूटिव ने गलत इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो उसको प्रिविलेज मोशन के अंदर वो सेंश्योर कर सकते हैं. अगेन द कॉलिंग अटेंशन मोशन इज ऑल्सो देयर टू डाइवर्ट द फोकस ऑफ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री फॉर दैट स्पेसिफिक जो ये है पीपल्स के जो इंटरेस्ट है उनको फोकस करने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन यूज करेंगे. फिर उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन है, मतलब वो पूरे हाउस का फोकस है वो पर्टिकुलर पीपल्स के इस पे इंटरेस्ट पे डाइवर्ट कर देगा. अगेन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम का नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिस है, इट केम्स अंडर द आर्टिकल 75. आर्टिकल 75 क्या कहता है कि पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड थ्रू पार्लियामेंट इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. सो पार्लियामेंट का आपके साथ फेथ नहीं होगा. नो कॉन्फिडेंस मोशन आप जब पास कर लिया तो ऑब्वियसली देयर इज अ नो फेथ इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का कोई फेथ नहीं रहा तो ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन if the motion of no confidence motion get passed within the parliamentary system, right? So एक important devices है parliament through which parliament functions. Okay, कोई doubt होगा तो पूछ लेना. Okay, then we will discuss the कैसे laws pass किए जाते हैं. Okay, the functions. The most important function of parliament is to pass the laws, to make the law and that passing of that particular law. तो law दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ऑर्डिनरीज लॉ होते हैं, राइट, एंड दूसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं. तो वो भी पार्लियामेंट ही पास करती है और ऑर्डिनरी लॉज भी पार्लियामेंट ही पास करती है. तो
और जो ये है बिल्स है पार्लियामेंट के जो बिल्स है वो पब्लिक होते हैं और प्राइवेट भी बिल्स होते हैं. तो पब्लिक बिल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक बिल्स एंड प्राइवेट बिल? द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट पब्लिक बिल इज द गवर्नमेंट बिल. गवर्नमेंट जो लॉज बनाने के लिए बिल इंट्रोड्यूस करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर है उसको पब्लिक बिल कहा जाता है. और द प्राइवेट बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट. सो वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में नहीं होंगे, the members which are not, the bills which are not from the government and which is introduced by the opposition party or the independent member, that has been called as a private member bill. So ये important चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, right? If you are understanding the legislative process. तो ordinary bill जो pass करने के लिए it has given the 5 steps. 5 steps are there. Then there has been a money bills जो सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं यहाँ पे भी, लेकिन थोड़े से डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंट प्रोसीजर. देन द अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज ऑल्सो डिफरेंट प्रोसीजर इज देयर. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ऑर्डिनरी बिल्स. ऑर्डिनरी बिल्स कैसे पास किए जाते हैं, राइट? ओके, so there is a 5-step procedure. Pass the ordinary bill within the parliament. पार्लियामेंट में बिल कैसे बनता है? जब दो लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास कर लेंगे, फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाएंगी, फिर ही वो बिल लॉ बन जाता है, राइट? सो दिस इज द 5-step procedure. The first procedure is the first reading, where the bill get introduced within the house. मतलब स्पीकर के परमिशन के बाद bill will get introduced within the house and just read out the normal objective behind that, objective behind the particular bill. ये first procedure हो गई. The second procedure is that it is get published in the gazette. जो ऑफिशियल गैजेट है इंडिया का, the bill will get published after the first reading within the house. Then the third step is the second reading. Second reading within that house, within house. Okay, ये second reading हो गया within that particular house. But this is most important stage in the passing of bill. कैसे? In the second reading stage, the house can transfer bill to the committee. जैसे कि पार्लियामेंट्री कमिटी हो गई, और जैसे कि जॉइंट कमिटी हो गई. जॉइंट कमिटी मतलब जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट मेंबर्स हैं उस कमिटी में, तो उसके पास वो बिल ट्रांसफर कर देती है. दिस इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, राइट? मतलब कमिटी के पास बिल ट्रांसफर करना, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन. दिस इज फॉलोड इन द वॉलंटरी बेसिस. ओके, सभी बिल्स को कमिटी के पास ट्रांसफर करना, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कमिटी हो गई, कमिटी ने रिकमेंडेशंस दे दिए, देन उसे डिस्कशन किया जाता है उस बिल पे, राइट? द बिल गेट डिस्कस्ड विद इन द हाउस. देन अगेन दैट विल, द हाउस विल आस्क फॉर पब्लिक ओपिनियन. मतलब इस बिल पे हाउस पब्लिक के ओपिनियंस भी मांग सकता है. तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस स्टेज. सेकेंड रीडिंग में आप कमिटी स्टेज पे भी जा सकते हो, देन यू कैन आस्क फॉर अ पब्लिक ओपिनियन फॉर दैट पर्टिकुलर बिल. ओके, तो पीपल विल गिव देयर ओपिनियन, देन हाउस कैन सिलेक्ट इट एंड इट कैन बी
इंटीग्रेट इट विद द बिल। सो पब्लिक के जो ओपिनियन है उस पर डिस्कशन होता है, कोई अच्छे ओपिनियंस हो तो इसको इंक्लूड किया जाएगा, राइट। देन द बिल विल केम टू द हाउस, then clause by clause discussion on that particular bill will be followed after the generation of public opinion. then यहाँ पे कुछ members है जो amendment ला सकते हैं, तो members can suggest amendment for that particular bill, और कौन सा भी clause होगा, clause by, because there will be discussion by on the clause by clause, so obviously clause by clause ही वहाँ पे amendment suggest कर सकते हैं parliamentary members. So this is most important thing. Then it comes the third reading stage. थर्ड रीडिंग स्टेज में क्या होता है कि वहां पे रीडिंग होता है बिल का आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ पब्लिक ओपिनियन और इंक्लूजन ऑफ एनी अमेंडमेंट, देन बिल विल गो फॉर अ वोटिंग. इस स्टेज में, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इस स्टेज में कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं कर सकते. मेंबर कैन नॉट प्रपोज एनी अमेंडमेंट इन द थर्ड रीडिंग स्टेज, राइट. यहाँ पे सिर्फ वोटिंग होगा. इफ बिल गेट्स वोटेड देन इट गेट ट्रांसफर टू द सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस में वो ट्रांसफर किया जाता है. सो सेकेंड हाउस में सेम प्रोसीजर फॉलो की जाती है, राइट. दिस सेम प्रोसीजर. Then if the second house passes the bill, then that will send it to the presidential assent. Presidential assent के लिए भेज दिया जाएगा that bill. If it suggests the amendment, then bill will get transferred to the original house. Original house पे वो bill transfer हो जाएगा. If the amendment is accepted, then bill will get sent to the president. If the second house मतलब 6 मंथ के लिए कोई एक्शंस नहीं लेता है, तो that will lead to the joint sitting, which is called by the president. और प्रेसिडेंट जो जॉइंट सिटिंग होगा उसमें प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो बिल पास हो जाएगा और दैट विल लीड टू द देन अगेन प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा जाएगा. सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ ऑर्डिनरी बिल, 5 स्टेप की प्रोसीजर. बट अगर मनी बिल को हम कंसिडर करें, मनी बिल, सो इट गेट ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. लोकसभा में प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद ही उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है. इफ यू कंपेयर द मनी बिल द ऑर्डिनरी बिल, राइट. ये इंपॉर्टेंट डिफरेंट है. अगेन द सेम प्रोसीजर विल फॉलो, राइट. यहाँ पे कमिटी स्टेज भी आती है, राइट. अगेन जब लोकसभा से राज्यसभा में बिल जाता है तो राज्यसभा के बाद इट इज ओनली 14 days राज्यसभा हैज टू पास द बिल और सजेस्ट एनी अमेंडमेंट. सो लोकसभा में मनी बिल्स के लिए पावर ज्यादा है, लेकिन ऑर्डिनरी बिल्स में हमने देखा देयर इज ए इक्वालिटी ऑफ पावर बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा. बट जब अमेंडमेंट राज्यसभा बनाती है तो उसको एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना लोकसभा के हाथ में. लोकसभा कैन एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स और रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स. If rejected, the money bill get passed. If accepted, the money bill also get passed in the rejection also. Okay, president has to give the assent. He cannot withhold that particular assent, right? Again, the money bill, there is a no provision of joint sitting. ये important चीज हमें ध्यान में रखनी है. Again, the constitution amendment bill पे भी हम अगर डिस्कस करें, if we discuss the constitution amendment bill, it can be introduced in the both houses. As we have seen, the money bill only introduced in the Lok Sabha, but constitution amendment bill पे भी equality है. constitution amendment bill can be introduced in the Lok Sabha और राज्य सभा, दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. उसके लिए पहले ही प्रेसिडेंट्स के
एसेंट है वो लेना, प्रेसिडेंशियल एसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द अर्लियर स्टेजेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए भी जॉइंट सीटिंग अवेलेबल नहीं है, राइट। जो 5 हमने स्टेप्स देखे वहां पे जॉइंट सीटिंग का जो ऑर्डिनरी बिल में प्रोविजन था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए प्रोविजन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगेन देन सेपरेटली दोनों हाउसेस को पास करना पड़ता है ये बिल मेजॉरिटी से। अगेन द प्रेसिडेंट हैज टू गिव द असेंट, he cannot withhold। so this is the 5 steps हमने देखे कि फर्स्ट रीडिंग, देन सेकंड रीडिंग, देन थर्ड रीडिंग। सेकंड रीडिंग के इंपॉर्टेंट है, व्हाई? बिकॉज देयर कैम्स द कमिटी स्टेज, कमिटी के पास जाता है बिल उसे डिस्कस करने के लिए, एंड विद इन द सेकंड रीडिंग ऑल्सो पब्लिक ओपिनियन कैन बी जनरेटेड, पब्लिक अपना ओपिनियन दे सकता है बिल के बारे में। इन द सेकेंड रीडिंग स्टेज में ही यहाँ पे अगर देखें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन प्रपोज द अमेंडमेंट टू द पर्टिकुलर बिल में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं, तो उसके बाद ही वोटिंग हो जाता है, राइट। सो सेकेंड रीडिंग स्टेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, ओके, टू पासिंग द ऑर्डिनरी बिल्स की पासिंग का अगर देखें तो वहां पे ये प्रोसीजर फॉलो की जाती है 5 स्टेजेस की। सो दिस इज द होल प्रोसीजर। जैसे कि हमने देखा कि कैसे फंक्शंस करती है पार्लियामेंट के कोई फंक्शनरीज कैसे कैसे है, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस कौन से है तो फंक्शन के लिए, और पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है, राइट। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट के कुछ ज्यादा चीजों को वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेक्स्ट मी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ये कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब फॉर द अनअकैडमी then please use my referral code, that is the Aniket. You will get a 10% of discount. So thanking you, we will be meeting in the next lecture to discuss the different aspects of the polity, okay.